topic. So we have seen pulse input, we have seen step input. Now we'll see the models which are used to characterize non-ideality. There are two models and tangent series model. Models are useful for representing flow in real vessels, scale up and diagnosis of pure overflow. Various models are Gaussian model used for small deviation from plug flow, and tangent series model used for again small deviation from plug flow, or it can be used for CSTR also. Can use for both CSTR as well as plug flow. Applicable for turbulent flow in pipes, laminar flow in very long tubes, flow in packed beds, flow in long channels, conveyor, etc. So various applications. Where you can use it as a key. This for characterizing flow in mostly reactors it's required. So it's not applicable for laminar flow in short tubes, very short tubes. Laminar flow of viscous fluids, parabolic velocity profile, main cause of deviation of plug flow. So see that you need more of turbulent flow के लिए applicable है, right? Turbulent flow चाहिए. Axial dispersion, you assume a diffusion-like process superimposed on plug flow. Plug flow is essentially no mixing, right? That's what we said. Plug flow क्या रहता है कि there's no mixing between adjacent layers of fluid. So we assume or superimpose a dispersion kind of a thing, diffusion, diffusion-like process or dispersion on plug flow. It's called axial dispersion or longitudinal dispersion. And this is basically because of fluid velocity gradient, because when the fluid is flowing from through the pipe, velocity gradient. Any questions? So this is different from molecular diffusion. This molecular diffusion leads to radial mixing. Same पूछा था बीच में कि radially, yes, concentration we assume it is same in one layer, one particular layer, it's same concentration throughout that radial direction, but not in axial direction. And we use a term called D, dispersion coefficient, similar to diffusion coefficient. Units are all the same. Diffusion coefficient पढ़ा होगा आप लोगों ने mass transfer में, right? What is diffusion coefficient? D. What does it represent? याद किसी को क्या? मास ट्रांसफर में डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा किसी ने? सर वो डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी कितना होता है वो बताते हैं. क्या? डिफ्यूजिविटी बताता है वो कि ए की बी में कितनी हो सकती है. आवाज कट रहा है आपका. Can you repeat that? हेलो Yeah. सर वो बोल रहा है कि डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी. Yeah, but what is diffusivity? When you say The transfer of the moment of molecules from higher concentration to lower concentration.
एक्चुअली इट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट. मॉलिक्यूल्स कैसे मूव होता है, दिस वाई इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन. ओके. सो नाउ इन दिस केस डिस्पर्शन रिप्रेजेंट्स स्प्रेडिंग प्रोसेस. हमने देखा था, राइट? हमने देखा था कर्व, जो देखा था बेल शेप कर्व. बताया था आपको कि अगर नैरो बेल शेप कर्व रहेगा तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है, और जितना वाइड रहेगा बेल शेप का उतना स्प्रेड होता है. So you'll see this here. If you take this pulse input, ट्रेसर दिया यहाँ टाइम t equal to 0 पे, तो यहाँ पर if you see here pulse starts spreading, and this can be caused by many things: velocity profile, turbulent mixing, molecular diffusion, etc. यहाँ पर स्प्रेडिंग कम है, यहाँ पर स्प्रेडिंग ज़्यादा है, यहाँ डिस्पर्शन ज़्यादा है. यहाँ पर आया बाय द टाइम कम्स आउट इज़ वेरी वेरी डिस्पर्स्ड. सो एसेंशियली यहाँ पर जो मेजर करेंगे तो काफ़ी डिस्पर्शन है यहाँ पर. अगर ऐसा आता कर्व तो डिस्पर्शन कम रहता. So this D, which represents dispersion, large value of D, rapid spreading of tracer characterizing backmixing. जो backmixing characterize करता है, जो नीचे वाला कर्व है. And small value of D is slow dispersion. D equal to 0 is no spreading, essentially plug flow. So value of D will tell us whether we are closer to plug flow or away from plug flow. Any questions on this? Okay. So we define a dimensionless number D by UL. It is used to characterize spreading. It's also called dispersion number. And D we calculate by tracer experiments. So tracer experiments किया था हमने, उसमें से हम D calculate कर सकते हैं. So we calculate T bar and sigma square. ये देखा था हमने कल. ये फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट किया और कुछ नहीं है, सेम थिंग. And we have seen that variance is square of the spread of distribution, right? Basically, it is variance is nothing but standard deviation right. So when you look at this one, यहाँ पर स्मॉल सिग्मा स्क्वायर है, यानी स्मॉल सिग्मा है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, यानी वेरिएंस भी कम है. यहाँ पर लार्ज सिग्मा है, जितना स्प्रेड करेगा ये उतना लार्ज रहेगा वेरिएंस, ये जितना कम करेगा उतना कम रहेगा वेरिएंस. ओके. So we'll use this of prediction between plug flow and mixed flow. Reactor volume निकालने के लिए भी करते हैं. So D by UL, when it is 0 or negligible dispersion, then it is plug flow, and D by UL is infinity, very large dispersion, it is mixed flow. So the value of D by UL will tell us where we are, or where the process flow of the liquid is. Is it towards plug flow or is it towards mixed flow? ओके. डिस्पर्शन रिप्रेजेंटेशन प्लग फ्लो मॉडल यहाँ पर दिया, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल दिया यहाँ पर, and these are fluctuations. This is all dispersion is. Fluctuation due to different velocities and due to molecular and turbulent diffusion. This is what is going to cause mixing between this layer and this layer, different layers. We काफी बताया, but you can take this layer also. We are talking about closed layers. How is the dispersion or mixing happening? ठीक है. Evaluation dispersion number. You can calculate sigma square is 2 dl by u cube, और sigma theta square is nothing but sigma t, sigma based on t जो हमने calculate किया था, sigma square and the sigma t, and divide by mean t bar, mean resistance time t bar square, that is equal to 2 into d by ul. So if you know u and if you know length of the tube or reactor, then you can calculate what is d from variance. सिंपल, इसका डेरिवेशन अगर देखना नहीं है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला सिग्मा थीटा स्क्वायर इक्वल टू डी बाई यू एल. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? ये मॉडल में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है अपने को, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, डेरिवेशंस वगैरह नहीं है. डेरिवेशन सी एस टी आर का है शायद,
बट आई डोंट नो, नहीं वो भी नहीं कवर किया मैंने. डोंट वरी अबाउट इट, हमने पहले कवर किया है, सेम सेम डेरिवेशन आता है इसमें, ये सीधा. So when you fit dispersion model for small extents of deviation, let is d by ul less than 0.01, this is the type of curve you get. Right, this is e theta versus theta. Theta is nothing but t bar, dimensionless time. So plot किया तो this is first one is very very low d by ul, that's why it is very narrow peak and very little spreading. जैसे d by ul बढ़ता है जैसे spreading बढ़ते जाता है. That तो 0.01 में भी काफ़ी स्प्रेड हो गया. That's why I'm saying कि d by ul less than 1.201 is more like blood flow. ये 0.0128 के लिए लिया है यहाँ पर कमेंट. At this value of d by ul, the tracer is coming as non-symmetrical. यहाँ पर जो कर रहा है लास्ट वाला, this should be the upper limit for use of small deviation assumption. और कैलकुलेशन करने के लिए you can calculate from this curve, ये e theta versus time theta curve के हम कैलकुलेट कर सकते हैं. You can calculate from the peak e theta max is equal to, ये दिया उनका डेरिवेशन कुछ आएगा 1/√4 pi d by ul. So if you can measure the pulse output, उसका e theta का ड्रॉ किया हमने, so you can say measure this value and that will give us this thing and we can find out ul पता रहेगा तो d फाइंड कर सकते हैं. And पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज जहाँ से उसका स्लोप बहुत बढ़ रहा है, यहाँ तक ग्रेजुअल स्लोप था, यहाँ सडनली स्लोप बढ़ गया. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 0.61 टाइम्स ई थीटा मैक्स. एंड यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है 2 इंटू रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी बाई यू एल है. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, बट अल्टीमेटली यही है. यू टू यूज दिस वन, sigma theta square is equal to 2 d by ul. So if you know sigma theta square, you can find out the value of dispersion number. This is the most important thing. बाकी सब ठीक है. आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, इस भी आएगा. We'll see that. right? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो you can solve MCQ में आ सकता है वो. ठीक है. Any questions? This is just shows the types of curve you get for different values of d by ul. Okay. So this is one equation. And this is another equation for calculation of d. If you know sigma theta is nothing but sigma square upon t bar square. सिग्मा स्क्वायर हम निकाला था कर से कल, टी बार स्क्वायर भी निकाला था, ये पता है तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है. देयर आर नो क्वेश्चंस, विल प्रोसीड फर्दर. ये अगर लॉन्ग ट्यूब लिया यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो पल्स इनपुट दिया है एंड इज फाइंडिंग आउट सिग्मा स्क्वायर हियर. एंड इसने एक्चुअली डिसाइड रिप्रेजेंट किया कि डिफरेंट वेसल, सपोज इसे टेक एन नंबर ऑफ CSTRs इन सीरीज दैट्स इक्वल टू PFR, राइट. तो सबका अगर ये एक एक वेसल लिया हमने और सबका सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट किया तो हाउ आर दे रिलेटेड. तो एसेंशियली व्हाट इज सेज कि अगर हम लॉन्ग ट्यूब लिया तो सिग्मा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ. जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा. अगर यहाँ पर लिया हमने ट्रेसर तो कम स्प्रेड होगा. so you'll get something which is smaller, or rather like this somewhere, something like this, something like this you'll get it. जितना ज़्यादा रहेगा लेंथ यहाँ पर, the more we increase the length, the more spreading will take place और फ्लैट होता जाएगा आपका अर्थ.
So this is one thing you should remember. MCQ आ सकता है इसमें. So variance is proportional to length of the pipe or PFR. ठीक है. अगर यहाँ लिया हमने ट्रेसर तो it will be even much more narrow. So as the length increases, the spreading will happen because dispersion होते जाएगा, mixing होते जाएगा, तो spreading भी होते जाएगा. So for large deviation, that means we saw that 0.01 से ज़्यादा रहा तो बहुत large deviation रहता है. If the pulse response is broad, it passes the measurement point slowly enough, it changes shape, it spreads. Okay, this gives a non-symmetrical curve. If you see this E theta versus time E theta, यहाँ पर इनिशियली ये 0.01 के लिए है, 0.02 के लिए और कम हो गया, 0.05 के लिए और कम हो गया, यानी स्प्रेडिंग ज़्यादा हो गया. यहाँ स्प्रेडिंग ज़्यादा हो गया, यहाँ पर इन्फिनिटी के लिए it will become like this. There is no peak. This is closer to CSTR. ठीक है. तो समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन PFR एंड CSTR इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्शन नंबर. यहाँ पर देना था फॉर PFR dy/ul should be for CSTR ठीक है. So this could be another MCQ. What is dy/ul for PFR and CSTR? ठीक है. ये कर्व के इक्वेशन कैसे ड्रॉ के बताया. एसेंशियली ये जो है ये टर्म निगलेक्ट किया तो हमारा वो इक्वेशन मिल जाता है. E थीटा इक्वल टू थीटा सिग्मा थीटा स्क्वायर इक्वल टू डी बाई. ये निगलेक्ट किया तो वी गेट दैट इक्वेशन. यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया है, बट बिकॉज इट इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, यहाँ पर निगलेक्ट किया तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाता है. सिग्मा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन टी बार स्क्वायर टू डी बाई यू आई. We got this equation from this. Any questions? बहुत साइलेंट है लोग. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देवेंद्र. नो सर, इतना मतलब बहुत थोड़ा फास्ट हो रहा है. हाँ, अभी क्या है, लेक्चर खत्म, पोर्शन खत्म करने का तो फास्ट करना पड़ेगा आज ना. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बोला ना डिस्पर्शन नंबर समझने का है आपको. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन नंबर? dy/ul, लो वैल्यू ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ dy/ul, दैट मीन्स PFR, लार्ज वैल्यू ऑफ dy/ul मीन्स CSTR. इतना ही है मेन. तो यहाँ पर और कुछ नहीं है. मेन थिंग जो था हमने डिटेल में कवर किया, फाइंडिंग आउट सिग्मा स्क्वायर एंड टी बार स्क्वायर फ्रॉम pulse input. That was the main thing. Once you get that, you can fit any model to it. Sigma square मिल गया, T bar square मिल गया, तो I can fit any model to this. यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू मेरे पास है, I can find out what is the value of this. And you should understand the concept कि क्या when you say dispersion number बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर. When it is very small, what does it mean? When it is very large, what does it mean? कल भी बताया था मैंने आप लोगों को. ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आई जस्ट एक्सप्लेन इट बट नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डज डिस्पर्शन मीन एंड व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट.
And if it is a T or PFR, this is like PFR, right? PFR लिया हमने long वाला. So how does this percent change with the length of the reactor? कि यहाँ पर ज़्यादा मिक्सिंग के लिए टाइम मिलेगा तो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. जितना जितना हम कम टाइम लेंथ कम लेंगे उतना कम स्प्रेड होगा. देयर आर कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं है. न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल रहेगा. सर या सर जरा ऊपर का ग्राफ दिखाए ना उसके, इसके आगे. हाँ सर, यहाँ पे सर डाइम यही डायमेंशनलेस ई कर्व कैसे बताए सर, रिलेशनशिप बिटवीन दिस डायमेंशन. सर ई का तो पर मिनट होता है ना. ई थीटा, ई थीटा इज टी बार इंटू ई कैलकुलेट किया था हमने कल. ई इज टाइम इनवर्स राइट, इंटू टी हाँ बार. टी बार इज टाइम, तो डायमेंशनलेस हो गया ना. ओके सही है सर. एंड थीटा इज टी अपॉन टी बार. सेम कर रहे हैं, उसको सिर्फ ट्रांसपोज किया, ट्रांसफॉर्म किया टू डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस इन डायमेंशनल टर्म्स, और कुछ नहीं. वहाँ भी ऐसे ही कर रहा था, बेल शेप कर रहा था वहाँ भी. तो ई वर्सेस टी, now we're just normalizing it. It is normalized. Shape वही आने वाला, shape is not going to change. It's just normalizing it with time. So then you can apply it to any vessel. That's a benefit of normalization ना. क्यों करते हैं हम normalization? And if I know d by ul is also dimensionless, right? Again d by ul is dimensionless. If I know any vessel and I know d by ul, I know what kind of shape I'll get. ठीक है? Stop me, मैं पास जा रहा हूँ, but you can stop me. ऐसा कुछ नहीं है कि you cannot stop me. I'm just telling you concepts here. ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है. Understand main thing which I'm highlighting here. Derivation वगैरह कुछ नहीं है. We are not going to look at derivations. No time for all that. ठीक है? Okay, so once we have this d by ul, there's another concept called Peclet number. Peclet number पढ़ा आप लोगों ने मास ट्रांसफर में? नहीं पढ़ा क्या? सर आर ई इंटू स्मिड नंबर होता है ना. Yes, RE into Schmidt number होता है. So essentially it is advective transport without a diffusion transport. Advective is, what is advective? It's mostly momentum but without heat, without temperature change. So it is L by L U by D. एंड ये सब पैक्ले दिखाया मैंने आपको. बेसिकली पैक्ले नंबर इज आर एल इंटू स्वेट नंबर. एंड व्हाट वी सी इज एसेंशियली जो डिस्पर्शन नंबर था, ओके, यहाँ हमारा डिस्पर्शन नंबर डिफाइन किया है डी बाई यू एल, नथिंग बट वन अपॉन पैक्ले नंबर. ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करने का अपने को. और सिंपल प्रॉब्लम आएगा, एकदम आएगा भी. तो लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम्स. ये नहीं, ये भी नहीं, डाला नहीं क्या? ओके.
me see if I have a problem. ओके, सो जो प्रॉब्लम हमने किया था पहले वाला, लेट्स लुक एट दैट वन। जो कल किया था ना हमने 11.1, उसके लिए टी बार निकाला था हमने, राइट? टी बार वाज स्पेस हियर एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 13.1। हमने निकाला था टी बार इक्वल टू 15 मिनट्स, बराबर। और सिग्मा स्क्वायर कितना निकाला था हमने? निकाला था क्या? नहीं निकाला था क्या? नहीं सर, ये वैल्यू नहीं निकाला था शायद। हाँ, ये वैल्यू नहीं निकाला था सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर नहीं निकाला था। तो सिग्मा स्क्वायर यू कैन कैलकुलेट। सिग्मा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, लेट मी शो यू हियर। Sigma square was सर तो 0 to infinity सर इंटीग्रेशन t minus t bar into t dt। integration t minus t bar whole square ci delta t, ऐसा कुछ था क्या? सर e dt था सर। ये dt था क्या? एक मिनट, लेट मी सी कहाँ गया। t minus t bar e dt। डिवाइड बाय क्या था? ये था क्या? इसका एक और फॉर्मूला है which I will give you here, summation of ti square ci upon summation of ci minus t bar square, which is nothing but summation of ti square ci upon summation of ci minus summation of ti ci upon summation of ci whole square। This is basically t bar का। तो हमने कैलकुलेट टी बार कैलकुलेट किया था हमने। So based on this formula, you can calculate sigma square for that data, and that can use that in the problem। ठीक है, ये आप कल होमवर्क करके कर लेना, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने किया था ईच वैल्यू के लिए किया था ना हमने कैलकुलेट, यहाँ पर for each of these values you can calculate this sigma square, I mean data to calculate sigma square। इसका sigma square आता है 47.5 minute square। So now for that same problem, look at तो सिग्मा थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन टी बार स्क्वायर, सो इट इज 15 स्क्वायर अपॉन 47.5। कितना आ जाएगा सिग्मा थीटा स्क्वायर? तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, ओके। 47.5 अपॉन 15 स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू? 0.211। एंड दिस इज इक्वल टू क्या दिया था हमने? फॉर्मूला क्या दिया था?
sigma theta square equal to two dy ul. और प्रॉब्लम में क्या दिया है? ओके, डी बाई वैल्यू निकालना था इसमें, तो डी बाई वैल्यू कैन फाइंड आउट कितना आएगा? 0.1055 0.105. इस प्रॉब्लम ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं है, बट देयर बी अदर प्रॉब्लम्स आई कैन चेक द प्रॉब्लम्स है क्या. डी बाई वैल्यू नहीं है. चेक प्रॉब्लम है. ओके, सिमिलर ही रहेगा, सिंपल ही रहेगा प्रॉब्लम इसका, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा. अगर यू दिया है और एल दिया है तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज डी वैल्यू. अगर टी बार और सिग्मा स्क्वायर दिया तो यू कैन फाइंड आउट दिस डिस्पर्शन नंबर, और अगर यू और एल दिया तो यू कैन फाइंड आउट डिस्पर्शन कोफिशिएंट. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है. ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन और ये फॉर्मूला है. So next is tanks in series model. So here what we assume is there are number of tanks in series. Okay, so pulse response and RTD function वगैरह लिया इसने, dimensionless number time define किया है theta, right? And there are जैसे theta I रहेगा, right? Theta is equal to n times, n is number of tanks. हमने देखा था PFR is equal to how many CSTR यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? You see in CSTRs in series, ना? When do CSTRs in series become PFR equivalent to PFR? इन्फिनिट CSTR. राइट. सो यहाँ पर जो दिया है इसने, ये सब इक्वेशन दिया है. थीटा जो रहेगा पूरा n टैंक्स के लिए रहेगा, और ये थीटा इज फॉर वन टैंक. टी बार इज इक्वल टू n टाइम्स टी आई, और टी आई इज इक्वल टू टी बार अपॉन n. सो इफ इट्स टोटल रेजिस्टेंस टाइम इज टी बार and there are n tanks, that means resistance time in each tank is ti bar, right? Similarly we can write sigma square is equal to t bar square upon n, or n is sigma square is equal to n into ti bar square. These are all formulas which you need to remember. Sigma theta square equal to 1 upon n, and sigma theta square equal to n. And how we define sigma theta square, they found already, right? Sigma square upon t bar square. So ultimately यही हो जाएगा, कोई भी कर रहेगा, और what we are going to get is sigma square and t bar, और ये यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टैंक्स कितना रहेगा. Essentially what we are doing is, अगर कोई RTD रिस्पॉन्स का मिला हमारे को, and we can calculate t bar and sigma square, then we can find out this reactor can be represented by how many CSTRs in series. अगर CSTRs in series कम है तो it is closer to plug flow,
If CSTR in series ज़्यादा है तो it is closer to CSTR. Right? So if n is small, it is like PFR. If n is not large, like CSTR. बाकी हेलो सब सर, या n क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टर्स है ना? नंबर ऑफ टैंक्स इन सीरीज, ये है ना, टैंक्स। मॉडल का नाम ही टैंक्स इन सीरीज, CSTR इन सीरीज. तो सर ज्यादा हो गए CSTR तो वो PFR को अप्रोच करेगा। ओ ये राइट, उल्टा बोला मैंने. गुड, ये उल्टा बोला मैंने. राइट. उल्टा, इसे उल्टा बोला मैंने. So n लार्ज रहा तो PFR होगा, when स्मॉल रहा तो इज लाइक अ CSTR और 1 or 2 CSTR इन सीरीज. राइट, ये हमने पल्स इनपुट किया था. यू कैन हैव एन नंबर ऑफ टैंक्स इन सीरीज एंड ये एग्जैक्ट ट्रेसेस जैसे हमने उसमें देखा था डिस्पर्शन मॉडल, वैसे यहाँ पर मेजर कर रहे हैं. एंड देयर आर वेरियस इक्वेशंस, डजंट रियली मैटर, व्हाट वी नीड इज these थिंग्स. ये इक्वेशन याद रखने का है, इसमें से बेसिकली यही है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिग्मा स्क्वायर पता है, टी बार स्क्वायर है तो एन निकाल सकते हैं हम. जनरली ये पता रहता है, ये इक्वेशन याद रखा तो बहुत हो गया. So essentially you can represent this resistance time distribution by how many tanks in series. That's why the model is called tanks in series model. ठीक है, ग्राफिकली यहाँ बताया सब उसने. n equal to 20 लिया तो it is like a closer to PFR. n equal to 1 लिया यहाँ पर, it's like CSTR. सेम थिंग यहाँ पर ये थीटा है लिया और थीटा लिया है. इक्वेशन 3D एंड 3C, डिफरेंट इक्वेशंस लिए 3C एंड 3D. कहाँ गए, नीचे होगा कहीं. It doesn't matter. What is important is that the shape of the curve changes. Dispersion कम हो रहा है, narrow curve है, is like a PFR. Wide हो रहा है, spread हो रहा है, is like a CSTR. ये थीटा है लिया है और each time, और ये थीटा लिया. ये let us concern, this is more important, more relevant. ये थोड़ा each time के लिए लिया है. ठीक है. हेलो सर. या सर वो हाँ ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ में जो y एक्सिस से स्टार्ट हुए ना कर्व, वो इनपुट की है क्या? आउटपुट, वी ऑलवेज प्लॉटिंग आउटपुट, इनपुट को भी प्लॉट ही नहीं करते. रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज आउटपुट, नेवर तो इन. सर वो ऊपर से कैसे स्टार्ट हुई, वन से? समझ में नहीं आया. ये वाला, हाँ राइट. ये CSTR है. ये नहीं CSTR सर, वो ये दूसरा का, हाँ ये वही. वही है ना. सी बेसिकली CSTR में क्या तो कंप्लीट मिक्सिंग होता है, बाईपास होकर निकल जाता है ना बाहर. हाँ दैट्स व्हाई जितना लेट आएगा, जितना नैरो रहेगा पीक, दैट इज मोर टू PFR, इज लाइक PFR, राइट. हाँ यस. दिस इज CSTR. ओके. जितना आपका नैरो आएगा, वो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करो? n इक्वल टू 1 है ना, ये दिया ना. हाँ यस. यस सर, गॉट इट. आएगा तो इधर आएगा, n इक्वल टू 20 है जैसे, और 20 से 30 40 होगा तो और नैरो हो जाएगा पीक. ये n इक्वल टू 1 है ना. यहाँ पर n जैसे बढ़ते गया, ये सब कैसे चेंज होता गया, और ज़्यादा n करेंगे तो और ऐसा ऊपर आएगा. ठीक है. यस सर. ये सिर्फ ऐसे ही था बताया, करके रिलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे डाला है मैंने यहाँ पर. बट मेन थिंग आपको ये करना है कि आपको सिग्मा स्क्वायर टी बार स्क्वायर रहा तो एन कैसे निकालने का, इतना ही आएगा आपको. एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन एन इज लार्ज इट इज PFR, व्हेन एन इज स्मॉल इट इज CSTR.
ठीक है. I'm covering it fast because I don't want you to spend time in lectures tomorrow. ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. Main thing is how to find dispersion coefficient or dispersion number for dispersion model and number of tanks for tanks in series model. And what does it mean? What does d by ul small mean? What does d by ul large mean? What does n small mean? What does n large mean? ये इतना ही आपके स्कोप में है. सिलेबस में ज़्यादा नहीं है कुछ. ठीक है. सो लेट अस गो बैक टू दिस. ये अगर लिया हमने 14.1, यहाँ पर C वर्सेस T दिया है. Find the tanks in series model. Fill the tanks in series model to following mixing cup output data to pulse input, right? So what you need to do is you need to find T bar. You need to find sigma square. ये मिल गया तो you can find out n. n का इक्वेशन देखा हमने अभी. Sigma square is equal to T bar square upon n, right? So once you get T bar and sigma square, you can find out what is the value of n. When they say fit the tanks in series model to the following mixing cup output data to pulse input, that means what? You need to find T bar, you need to find sigma square, and from there find out n. That's all it means. So you get an answer. Okay, this RTD represents how many tanks in series? 5, 10, 15 कितना है? Is that understood? Okay, so say I have a question. If tau bars tau square is equal to 100, देखो अभी आप, you can write down if tau square is equal to 100 and sigma square is equal to 10, the number of tanks necessary to model a real reactor, the number of tanks necessary to model a real reactor as n ideal tanks in series is dash. 10 आएगा सर. बराबर. तो सिंपल है, कुछ नहीं है. टाउ बार पता है, सिग्मा स्क्वायर पता है, n निकाल लेगा. ओके. और दूसरा इसमें क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन डिराइव किया था हमने टैंक्स इन सीरीज मॉडल का इक्वेशन. सर या सर यहाँ पे इस ग्राफ में वो ई थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? हाँ, ई थीटा सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में? डायमेंशनलेस ये है ना. व्हाट इज ये थीटा डेफिनेशन क्या दिया आपको? हाँ, इनटू टी बार. सो व्हाई डू वी हैव डायमेंशनलेस? डायमेंशनलेस पढ़ा आप लोगों ने, राइट? क्यों डायमेंशनलेस टर्म्स क्यों यूज करते हैं हम? व्हाई डू वी यूज डायमेंशनलेस टर्म्स?
नहीं याद किसी को? Why do you define dimensionless quantities? Reynolds number, Peclet number, ये नंबर वो नंबर, डायमेंशनलेस नंबर्स क्यों डिफाइन करते हैं हम? कैलकुलेशंस इजी, हाँ, कैलकुलेशंस इजी होते थे. यू कैन अप्लाई टू एनी सिस्टम, राइट? जैसे अभी E वर्सेस T हमने जो कैलकुलेट किया, that was applicable for that particular data set only, right? But if I write it in dimensionless time, I can write to all the I can use for all the reactors. बराबर है? That's why we define all dimensional systems. Next to reactors in series देखना था मेरे को equation. हेलो सर. Yeah. सर ये जो हम n रिएक्टर्स लेंगे तो हर एक रिएक्टर का वॉल्यूम सेम रहेगा ना? Yeah, we are assuming same reactor volume always. Yes. कभी भी अलग रिएक्टर वॉल्यूम नहीं रहता है. जब भी इंडस्ट्री में जाओगे ना तो रिएक्टर वॉल्यूम्स आर स्टैंडर्ड फिक्स्ड. 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 5000 liters. You won't have random numbers. Right? So it's not going to be like different volume का reactor आएगा. Different रहेगा, but there is standard things. So if I want to put 2 reactors in series, I'll normally put 2 reactors of the same volume in series, not different volumes. I was looking for that. So I was looking for this equation. जो हमने किया था पहले ड्राइव लॉन्ग बैक. Equal sized MFR in series. तो इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक था, दूसरा था C0/Cn is equal to 1 plus k tau I raised to the power of n. ये हमने यूनिट 3 में शायद डिराइव किया था. So in that case, if I have a question, लिखो एक question for a first order reaction. नहीं, एक मिनट, let me see कहाँ गया. Okay, if tau is equal to 5 seconds, and first order rate constant k is equal to 0.25 seconds, and number of tanks is 5, and number of tanks n is equal to 5, then the find the conversion. सर के कितना है? 0.25. 0.25 है.
0.9826. नहीं नहीं नहीं, क्या दिया हमारे को? k इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड इनवर्स एंड टाउ इज इक्वल टू 5 seconds, n is equal to 5, बराबर, and this is nothing but C0 by Cn है ना ये। इसका वैल्यू कितना आएगा? फाइंड आउट दिस वैल्यू फर्स्ट। C0 by Cn क्या आएगा? 1 plus k is 0.25, टाउ आई कितना आएगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाउ आई? टाउ आई का वैल्यू क्या रहेगा? सर 1 1, करेक्ट। So this is 1 plus k tau upon n, right? Total tau upon n. So it is 5 upon 5 into raised to power of 5. क्या हो जाएगा वैल्यू? What is the value of C0 by Cn? सर 3.051 आता है सर 51 से। 3.05. हाँ And what is C0 by Cn? What is C0 by Cn? सर वो 1 माइनस एक्स से होता है ना। 1 minus x का होता है, कैसे होगा? What is 1 minus x? What is 1 minus x? Ca upon Ca naught. That means Cn upon Ca naught, C naught. उल्टा है। हाँ सर अपॉन 1 minus x, इतना अपॉन 1/1 माइनस एक्स है। ये सही। सिंपल चीज है, इसमें क्या है? Find out what is x now. सर 0.67 आता है। ठीक है, और इट कुड बी गिवन अनदर वे अराउंड। सपोज यहाँ पर आपको n नहीं दिया है और ये दिया, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज n। सपोज जैसे दिया रहता कि कन्वर्जन इज 67% and k is 0.25 and tau is 5 seconds. Find out what is number of tanks in series. कर सकते हैं ना, n की वैल्यू निकाल सकते हो आप। निकाल सकते कि नहीं? ये होमवर्क है आपके लिए, क्या करके देखो। अगर टैंक्स इन सीरीज मॉडल अप्लाई करना है तो फाइंड आउट नंबर ऑफ टैंक्स which represent this data. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? थोड़ा फास्ट किया है बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, एक दो फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही है और वही करने का, और कुछ नहीं। किसी कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो पूछ सकता है। यू कैन कॉल मी ऑफलाइन ऑल्सो, व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। कल लेक्चर की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आप बोलते हो तो आई कैन कीप। व्हाट डू यू थिंक? साइलेंस इज गोल्डन क्या? सर सिलेबस हो गया है क्या?
सिलेबस हो गया, इसलिए आज थोड़ा फास्ट किया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो फार्मूला है मेन, थोड़ा फार्मूलाज है, कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। मेन हमारा वही था, सिग्मा स्क्वायर और टी बार स्क्वायर कैसे निकालने का। टी बार स्क्वायर का हमने एग्जांपल किया था, सिग्मा स्क्वायर का नहीं किया था, तो आपको फार्मूला दिया है, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट फार्मूला है, तो कर सकते हो आप। एग्जाम में कोई सिग्मा स्क्वायर पूछने वाला नहीं, बिकॉज MCQ है, यू वॉन्ट हैव टाइम फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा स्क्वायर, बट एक बार करना है तो कर सकते हो आप, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सिग्मा स्क्वायर इज कैलकुलेटेड। लास्ट फार्मूला दिया वो यूज़ करके। तर या तरी लेक्चर्स किती आहेत अजून आपल्याकडे? लेक्चर देखो, चाहिए तो रखेंगे, कर प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, यू टेल मी इफ यू वांट लेक्चर। सर अगर लेक्चर होंगे तो रिवीजन ले सकते हैं क्या आप? अगर आपको चाहिए तो मैं रखूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप बोलेंगे मैं लेक्चर लेने को तैयार हूँ, यू टेल मी। सर तो अब पहले 3 चैप्टर की रिवीजन लो ना। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, यू टेल मी कितने लेक्चर चाहिए आपको। बिकॉज टुडे इज व्हाट, वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रख सकते हैं अगर चाहिए आपको, तो अपना है वैसे लेक्चर शेड्यूल, लेकिन आपकी मर्जी, बताओ मेरे को। और टेस्ट भी है हाँ आपका, सर, तो सर पहले 3 यूनिट का रिवीजन ले लो सर। ठीक है रखेंगे। कब तक चाहिए आपको, सैटरडे तक? हाँ सैटरडे तक। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कीप इट, कल परसों और सैटरडे को, नो इश्यूज। तो आपका टेस्ट कब लेना है फिर ये बताओ मेरे को, व्हेन डू यू वांट टू गेट द टेस्ट। MCQ ही रहेगा, 15-20 मिनट्स रहेगा। सर तो सर कल 4 बजे ले सकते हो क्या? हाँ ठीक है, चलेगा।